Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Sadia Afzal, जो कि जिनका मुझसे तारुफ इस तरह हुआ था that she happens to be my yoga instructor. And it's funny when you know how I found you. I just really wanted to start yoga. तो मैंने ना Insta पे बस लिखा like सर्च में योगा And my name came up. नेम्स आने लगे. मैंने देखा अच्छा कराची में कौन है, इस्लामाबाद में कौन है, तो काफ़ी ऊपर ही आपका नाम आ गया था. And that's The universe has its way. Yeah, and that's how I found you. Okay. फिर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये बात पता चली that she is also an anchor at 92 News, right? And तो ये भी बहुत interesting aspect था. And generally, like I could tell that she is the kind of person that who I would like to talk to and interview on this podcast. Not just in the sense कि अच्छा, you know, yoga and its benefits or why it's good, but also in general about her journey, जैसे हम हर podcast में करते हैं, and how she got to where she is. I always like people, like ऐसे लोग मुझे intrigue करते हैं who are doing multiple things. There's always a story. So just wanted to explore that. So how are you feeling today? I'm good, Hamna, and thank you very much for inviting Thank you me. for coming. I know कि आपका कितना busy schedule होता है, and I know how difficult it is for you. Just the amount of classes you do in a week. Yeah. It's a lot. That gets a lot. Yes. So so let's start with, you know, back then. Okay. Where were you born and raised? In Islamabad. I Acha. have been living in Islamabad since my birth, actually. Acha, Yeah. you were born here and Yes. then Acha. And where was your early schooling from? Behria. Acha. Yeah. Or university? Behria, and then when I was doing my business administration degree from Behria, then I found out about this journalism thing, and I started off with media in 2003 with PTV at that time. Acha. And it was a shaukiya thing, part time, कि अच्छा ये भी है तो let's explore this option as well. And how it happened was that one of my teachers at Behria, her husband used to be a producer, a big time producer at PTV at that time, and they were launching this morning show. So she came to me and she was like, if you're interested, because I was really active in school and college debates and quiz competitions and hosting college events. So she said, my husband is starting this morning show. If you're interested, then you should go and give it a try. And how old were you? I was 16 and a Acha. half, right? Acha. I was in college. I was doing my FSC at that time. And she came to me, told me about this program, and they were starting this new morning show. So I went, मजाक में कि चलो let's give it a try. I had no इरादा कि ये हो भी जाएगा. ये career हो जाएगा. Exactly. So I went, I gave that audition and came back. But Allah ka shukr, I never had that fear of camera. Acha. Right, I was never camera conscious and all. मुझे क्योंकि that confidence was there, and they gave me a few lines to read. I read those lines. I came back home, and then I finally found out that I got selected. So this was a very small segment, एक मौसम का हाल type weather segment in a morning अच्छा. show, because नए जो भी लोग होते हैं उनको इस तरीके से launch किया जाता है just to check See. कि क्या है camera confidence क्या है otherwise. So I started doing that 5-minute segment, and then alhamdulillah वो ज़्यादा अरसा नहीं चला. They gave me that show, complete show, and then from there was no looking back. अच्छा, I have a question at this point. तो आपने actual में क्या करना था? Did you have a? I wanted to become a pilot. अच्छा. Yeah, अच्छा. I wanted to become a pilot. अच्छा, and That was my big time dream. अच्छा, why was that? I don't know, it always fascinated me probably. And at that time बहुत कम लड़कियां जो हैं वो जाती थी इस तरफ, because हमारे लिए लड़कियों के लिए उस टाइम पे सिर्फ 2 प्रोफेशंस थे, या आप डॉक्टर बन जाएं या आप टीचर बन जाएं. Right. So I wanted to do something different. Right? And obviously अगर मीडिया नहीं होता, if I hadn't found out about this media career, I would have gone for that line to become a pilot. And what was your family support like? Because you were still in FSC, right? तो उनका क्या view था about this? Yes. अच्छा, उस time पे actually my teachers supported me. अच्छा. Because media, otherwise भी also it was a big thing, a risky thing especially. My field was pretty different from what
we usually have that concept about media, right? It's all showbiz for people, it's all about modeling, it's all about entertainment. But mine was strictly current affairs, that political side, news-based side, right? So it was acceptable at that time, but initial stage when I started over this morning show, I had to face a lot of difficulties from my family also. Achha. Not my parents. My parents were supportive, but वो था ना distant family members कहीं ना कहीं that ख़ानदान में कभी किसी लड़की ने जॉब नहीं की है और अगर करेगी भी तो ये मीडिया की जॉब करेगी, so that kind of Public thing. facing. Yes, कि ये तो this can't be acceptable. Especially I would say from my father's side. So I think my parents stood for me, they supported, and my father said that if my daughter wants to do something, she will do it. Right? So he was my support. And I think Was your mother ever a working woman? No, Acha, acha. no, Acha. she wasn't. She wasn't. And this was a big thing for my family, right? For distant family members. And my mother was quite happy about it. My father was very supportive. But वो एक चीज़ मीडिया को लेके हमारे दिमागों में घुसी हुई है, एक कॉन्सेप्ट है, there is this misconception, वो एक presumption है लोगों की, and I think अब तो काफ़ी कम हो गया है. But when I started, I'm talking about, this is in 2003. So now it's 2022. It's been all about 19 years. When I look back, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि almost 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं, 2 decades now. अगले साल 20 साल हो जाएंगे. और उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये आपका करियर होगा. नहीं, हाँ. So what was your father's job? He was in the Navy. अच्छा, वो नेवी में थे. Yeah. So I have lived all my life in E8 Naval Complex and right. Yeah, वहीं पे हम साइकिलिंग करते करते वो मगला बहुत रोड अच्छा पे. है. It's huge and it's beautiful. अब वो आर्मी में थे ना, NDU, तो हम बहुत दफा हम गए, तो we've seen so it. So that Air Force and then E8 and you know it was अच्छा. Same. like a home. Yeah, all it was these like a areas, home. all No these wonder sectors. you went to Bahria your entire life. Yeah. सही. तो अच्छा, फिर जब आपने ये स्टार्ट किया, उसके बाद what happened? How did your career and personal life progress after that? Yeah, very interesting question. And that twist is there. I wanted to become a pilot, as I told you, but then this media thing started. And I actually changed my line of education because of this field. अच्छा. From business administration, I wanted to have a degree in journalism. आजकल इतना कॉन्सेप्ट ये नहीं है that अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, आपको डॉक्टर्स भी नज़र आएंगे बहुत सारे मीडिया के अंदर, एज जर्नलिस्ट्स आपको हर फील्ड से लोग नज़र आएंगे. बट उस टाइम पे आई थिंक टीचर्स थोड़ा कहते थे या सपोर्ट करते थे. इनफैक्ट PTV यूज्ड टू बी अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, राइट? सो दे यूज्ड टू टेल यू दैट यू शुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस, you should go for education, you should go for journalism. So I thought I should do it. So then I went for this degree in journalism. And then, because of my career, I met my first husband. Acha, so you met him during your... Very young age. Okay. And we got married when I was 18. So was that your decision? No, mutual family decision. Obviously, my family was a bit... what should I say? Because of my age, that I was so young. So they were of this view that, I should wait. But circumstances were such, because he had to move to Canada. He wanted to get married before he moves. So then we decided to get married. And soon after our marriage, when I was 19, I had my son. So एक तो वो चीज़ होती है जो आप प्लान करते हैं, that at this age I'm going to do this. 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा. In my case, चीज़ें खुद ब खुद होती चली गई. And मेरे बहुत एक खूबसूरत एक saying लगती है, that is actually life. That life is what happens to you when you are busy making other plans. And in my case, it's all true. I was thinking of something else, and होना जो था वो कुछ और था. But I think acceptance is the key. मेरी लाइफ में हम ना आज तक जब जो कुछ हुआ है, अच्छा या बुरा, I have accepted everything. And I'm okay about it. I'm happy about how things turned out. There's no need to... You say that in your Shavasana as well. Okay? Stop asking why.
कि ये Yes, मेरे साथ don't क्यों ask हुआ, why. because that's what makes you miserable. Yeah, Just accept it as God's plan. God's plan. Yeah. You have to accept that there is this higher power there, and He is in charge. You are not. And as you mentioned, my class Shavasana, that is, I think, everybody's favorite time. So I always say that we have this urge to control each and everything in our lives. You know, you want to do this, you want to do that, you want your life to be like this in 5 years or 10 years. It's okay to let go. It's absolutely fine not to be in charge. Just let go of this urge to control each and everything in your life. And you will notice that your life gets easier. Easier. हाँ. Just accept whatever is happening. Why fight the flow of nature, basically? Let things unfold in a natural way, in an Right. organic way. Right. So what happened to your husband? हुआ क्या था? Because you had just gotten married and you had your son, and then your husband passed away उसके 1 साल के बाद. Yeah, 2 साल. because obviously थोड़ा उससे पहले we got separated. He moved to Canada and everything. अच्छा, आप मूव And- नहीं की उनके साथ? No. अच्छा. Because obviously I had to look after so many things here, and जब मुझे जाना था सारा कुछ करना था, but उससे पहले I think we were separated and हमारे अपने कुछ differences हो गए अच्छा. because long distance एक relationship Right. हो गया, and then I got this news that he was diagnosed of cancer at a very last stage, colon cancer. And your son was? My son was 2 years old when his father passed away. So I had to be strong, हमना. हम कहते हैं ना कि हमारे पास options क्या हैं. Life आपको बहुत सारे options देती है. I was a young mother, right? I told you that Very I young. was 19, right? When I had my son. Initially तो obviously समझ में नहीं आता था, but obviously alhamdulillah I had my parents' support and everything. Were you studying at this time? Yeah, I actually interesting story. मैंने अपनी graduation के final exams उस वक्त दिए जब मेरा बेटा 7 दिन का था. अच्छा. Yeah, he was only a week old when I had to go for my final graduation exams. And I remember my father used to drop me and he used to pick me up. So ये चीज़ें मैंने बहुत साथ साथ पैरेलल मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चली हैं. You know, उस टाइम पे एनर्जी भी नहीं होती है. Obviously, you're a mother yourself, so you know how. 7th day पे I know what I was you doing. So, अच्छा, मैं घर आई हूँ दूसरे तीसरे दिन and I started studying for my exams. And my son was 7 days old when I used to go to my examination center for my graduation exams. So, I had this only option to be strong for my son when his father passed away. Right? एक बेटा है, एक अल्लाह. आपकी लाइफ में जो चीज़ें आती हैं ना, आप उसको ये इस तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं कि आप उन चीज़ों को अपने लिए ब्लेसिंग समझते हैं, नेमत समझते हैं, रहमत समझते हैं या जहमत समझते हैं. मेरे लिए मेरा बेटा बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, ठीक है. और मुझे उसकी माँ नहीं बनना था, मुझे उसका बाप भी बनना था. हालांकि ये हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ जो माँ बनते हैं ना, वो बाप की ड्यूटी से भी बहुत मुश्किल ड्यूटी होती है. बट एज इन टर्म्स ऑफ कि आप उसको प्यार भी दे रहे हैं, आप वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से. सो हैड टू डू बोथ ड्यूटीज़. अब माशाल्लाह my son is now 16. Me and my son, we practically grew up together, right? So I remember going to my office, record my shows, and then come home, take him to zoo. So that kind of thing. And I still remember his first day of school. I have a lot of memories and I cherish those memories. मेरी लाइफ में हमने अगर कुछ गलत भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, मैं आज भी अपनी लाइफ में से आई ट्राई कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पिक कर लूँ, अच्छे डेज, अच्छे मोमेंट्स. These are few moments which I want to keep for myself for the rest of my life. और उसमें ये टाइम है. मतलब when you look back तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन अगर बंदा सोचे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं. आप उनके बारे में उतना सोचते नहीं हो. दिस इज़, यू नो, माई ब्रदर सेड टू मी द अदर डे कि मैं पहले एक जोन में ऐसे होता था कि मैं हर वक्त सोचता था आई हैड सच अ हार्ड लाइफ, लेकिन फिर आई फ्लिप्ड दैट नैरेटिव फॉर माई सेल्फ एंड ही सेड कि मैंने सोचा नो, बट
यू नो मैं 7 years का था, नहीं 10 years का था, और मेरे अब्बू जो है मुझे डिज्नी लैंड लेके गए थे और ये हुआ था, एंड सम पीपल ड्रीम ऑफ डूइंग दैट देयर होल लाइफ, एंड दैट मेमोरी वाज सो गुड, यू नो. बट वी कांट जस्ट कीप गेटिंग स्टक ऑन द फैक्ट, क्योंकि वी लॉस्ट आवर फादर टू कैंसर एज वेल, सो वी वर यंग तब, तो वो एक चीज़ बहुत डिफाइनिंग बन गई फॉर आवर लाइफ. You have seen your mother there, you know, you will remember her by her strength. Yes. Right? How she stood up for you guys when your And father she says the passed exact away. same thing कि मुझे तुम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग था होना था. अच्छा, ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, माँ के अंदर चीज़ ऐसी इनबिल्ट है, यू नो, आप उसको जो मर्ज़ी चाहें वो नहीं जा सकती. अब मैं अगर इस डिप्रेशन में बैठ जाऊं कि मेरी शादी में क्यों डिफरेंसेस आ गए, मेरे हस्बैंड की डेथ क्यों हो गई, तो मेरी औलाद का क्या कसूर है? राइट? औलाद का क्या कसूर है? बहुत औरतें करती हैं. मतलब ठीक है, आई वोंट से कि नहीं करना चाहिए, हो सकता है उनके जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं, बट डोंट क्रेब, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग. You have to be strong for your own self. अगर आप अपने लिए खुद ही कुछ करने को तैयार नहीं है, चलें औलाद को भी मैं एक तरफ रखती हूँ, आप अपने लिए तो खड़े हों. आप जब खुद ही गिर जाएंगे डिप्रेशन में और एंजाइटी में और हर वक्त खुद को कोसते रहेंगे कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया. सो टेल मी समथिंग, व्हाई somebody else is going to be kind to you if you are not kind to yourself. And the fact is कि चीज़ें होती हैं, and I'm not saying कि आपके साथ जो हुआ it was of a very mild nature. It's a very serious thing. It's a very big thing. You were so young and this happened. But the fact is कि लाइफ चलती रहती है. और अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरे साथ ज़्यादती हुई, उसमें then you can't move on. Then you are essentially destroying the rest of your life because of that mindset. So you have to force yourself out of it. वो कहते हैं ना, fake it till you make it. So you show up to work and you do it, and then you do it enough times until it gets better. And it does get better. You're absolutely right that no matter what happens in your life, good or bad, life goes on. Life goes on. It's not going to stop. जितनी जिंदगी आपके अल्लाह ने लिखी है वो आपने जीनी ही जीनी है. अब आप चूज कर लो. अब आप उसको जी लें, सही मानों में जी लें, या आप रोते पिटते गुजारते हैं. So choice is yours. So फिर after that, like आपके ऊपर I'm sure, I don't know क्या dynamics थे. Were you still living with your parents? Yeah. और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कितनी थी, किस पॉइंट तक थी? आई वॉज लिविंग विद माई पेरेंट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जब से मैंने काम शुरू किया है और जब से मेरी औलाद स्पेशली, मुझे अल्लाह ताला ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी रही हमेशा से, एज इन टर्म्स ऑफ माई जॉब एंड एवरीथिंग. मैंने हमने आज तक कोशिश की कि कभी मुझे पेरेंट्स से भी मांगना ना पड़े फॉर माई सेल्फ या मेरी औलाद के लिए. सो वो चीज़ आज तक चल रही है. मैं अल्लाह ताला से हमेशा, जो आपको दुआ जो मांगनी चाहिए, मुझे मेरे दिमाग में जो होती है, अच्छी ज़िंदगी की दुआ तो सब मांगते हैं. मैं अल्लाह से एक अच्छी मौत मांगती हूँ और मोहताजी ना हो इस ज़िंदगी में, ये मांगती हूँ. ये मेरी दुआ है. अब उस परवरदिगार का करम है कि उसने हमेशा लाज रखी है, इज़्ज़त रखी है. लोग बहुत बहुत बातें भी करते हैं. हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा औरत को बहुत बुरी चीज़ों का, रूमर्स का सामना करना पड़ता है, बट अल्लाह ताला इज़्ज़त रखता है, क्योंकि उस रब की ज़ात से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता. बिल्कुल. सो नाउ आई डोंट इवन वरी कि लोग क्या कहेंगे. आई डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स. ओके, सो उस टाइम पे जब when your husband passed away, तो obviously you were widowed, right? And उसी के अराउंड ही एक तो होता है ना कि आप खुद अपने आप को एक विक्टिम उसमें ना डालो, बट हमारी जो सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपने बात की कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इंडस्ट्री की बात की, बट जनरली करते हैं कि वो फिर एक लोग आप पे इतना तरस खाते हैं, आपको एक उसमें डाल देते हैं, जैसे यू नो इफ योर हस्बैंड डाइज देन दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो what was your experience like that? मतलब लोगों की तरफ से आपको कैसे फील हुआ आफ्टर योर हस्बैंड्स डेथ? ये हमेशा हर किसी को फेस करना पड़ता है. डिवोर्स हो गई तो औरत की गलती होगी, राइट? डेथ हो गई तो उसके बाद अब क्या होगा इसका, अब क्या होगा, बेचारी, ये हो गया, वो हो गया. यू नो दैट आई हेट दीज वर्ड्स, बेचारी. कोई बेचारा नहीं होता, सबके पास कोई ना कोई चारा होता है. अल्लाह ताला वो चारा प्रोवाइड करता है. इट्स अप टू यू. आपने बेचारे बन के ज़िंदगी गुजारनी है
या फिर आपने अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना है, चॉइस आपकी है। मैं हमेशा ये, अभी जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो फिर आपने बेसिकली फिर अपना करियर आपने टीवी और इसके अंदर कर दिया, बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया खुद को, बहुत बिजी कर लिया खुद को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी ना, नाउ यू हैव टू वर्क। एग्जैक्टली कि अब आप ये सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से प्रिविलेज्ड लाइफ, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप कहें कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मे बी हस्बैंड कर लेगा या कोई और कर लेगा या भाई कर लेगा। आई डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी। मुझे हम ना बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे पहले कहा ना कि मुझे मोहताजी से डर लगता है, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मोहताज कभी अल्लाह किसी का भी ना करे, किसी तरह से भी, फिज़िकली फाइनेंशियली कुछ भी। सो मैं किसी पे रिलाई नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फाइनेंशियली। और मुझे ज़िंदगी की ना मेरी एक बड़ी हसरत है दैट हमारे मुल्क में हर लड़की, चाहे मैं कहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो काम नहीं करती हैं सिर्फ इस वजह से दैट मे बी देयर हस्बैंड्स आर रिच, बाप अमीर हैं। आपका हस्बैंड या आपका बाप, मे बी इवन इफ दे आर बिलियनियर्स, आई जस्ट वॉन्ट एवरी गर्ल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दैट इज़ माई ड्रीम। बट बहुत सारे, आई एम सॉरी टू से, बट अभी जो हमारी नई जनरेशन है उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ बुरी लगती है, विच आई विश दैट वो हो जाए जल्दी चेंज, वो ये है दैट दे डोंट वांट टू वर्क, दे आर लेजी। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है नई जनरेशन के अंदर। हमें होता था कि यार करना है, आई एम वेरी इम्पल्सिव बाय नेचर, राइट। अगर मुझे मेरे दिमाग में भी कोई आइडिया आ गया है, इफ़ आई हैव टू डू समथिंग, आई वुड वांट टू इम्प्लीमेंट इट राइट अवे। आई वोंट वेट फॉर टुमारो कि मैं अगले हफ्ते कर लूँ, कल कर लूँ। आई जस्ट वुड वांट टू डू इट right there and then. Right. But now people are filled with ideas, but परसों कर लेंगे। एंड एक्सक्यूजेस, बहाने। अच्छा आज ये नहीं है, आज वो मार्केट बंद हो गई है, आज वो काम वाला नहीं मिलेगा तो ये नहीं होगा। अगर आपने करना है ना तो बहुत तरीके होते हैं। तो मुझे स्पेशली लड़कियों से एक मेरी दरख्वास्त है दैट प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। डोंट वेट फॉर दैट प्रिंस चार्मिंग, right, कि वो घोड़े पे आएगा and he will just take save you your life away and do everything for you. You have to be your own Prince Charming. You have to do everything on your own. So I just want every girl to be financially independent, even if their husbands, even if their fathers are rich, super loaded. They should know how to work. They should have a degree, they should have an experience. और एक इंडिविजुअलिटी की सेंस भी तो होती है ना, एक एम्पावरमेंट की सेंस होती है कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हुई हूँ, राइट। कि वो एक प्राइड होता है दैट आई एम सेल्फ मेड। हाँ, सो वो आनी चाहिए, राइट। और अब तो लाइक पहले ज़माने में तो ये था ना कि आपको, अभी भी बहुत सारी जगहों में है, लेकिन अब तो लोग इतना मना भी नहीं करते, राइट। लाइक पीपल आर ओपन टू इट। इनफैक्ट हस्बैंड्स अब इनकरेज भी करते हैं और पेरेंट्स भी इतने मना नहीं करते, बिकॉज थोड़ी सी ये चीज़ अब नॉर्मलाइज तो हो चुकी है। पहले तो ये था कि लाइक यू सेड, किसी ने काम ही नहीं किया था, वो वियर्ड था। और दो ही जॉब्स थी ना औरतों के लिए, सिर्फ और सिर्फ दो, या आप डॉक्टर बन जाएं या आप टीचर बन जाएं, राइट। और वो भी हर किसी के लिए नहीं होता था। इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज एंड स्टिल इज कि इट वाज फ्राउंड अपॉन दैट वुमेन वर्क एट ऑल। सो जिनको है ये अपॉर्चुनिटी, उनको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लर्न टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। मुझे ये चीज़ हमेशा से बॉदर करती थी। चलें आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज ये भी कन्वे होगा, आई होप कि कोई सुन ले। लेजीनेस, मुझे उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली मर्द भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट मैं, क्योंकि दिस पॉडकास्ट इज स्पेशली फॉर वुमेन, सो आई वांट एवरी यंग गर्ल टू बी एक्टिव इन लाइफ। सुबह उठना छोड़ दिया लोगों ने, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक उठ रहे हैं। आई वुड से एक दिन उठ के तो देखें सुबह 6 बजे, जस्ट सी कि क्या है, क्या फ़र्क आपको लगता है आपके डे में। आई एम एन अर्ली राइजर एंड आई, किसी दिन अगर मुझे देर से उठना पड़ जाए
सो मुझे पूरा दिन घबराहट होती है, हाँ, anxiety होती है कि बहुत लेट हो गया। हाँ। मुझे अच्छा शुरू में ऐसा नहीं था, एक टाइम ऐसा भी था कि जब क्योंकि ऑब्वियसली हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, रात 12 बजे के बुलेटिन्स पढ़ के हम घर आते थे, तो उस टाइम फिर देर तक भी सोना होता था। सो जब से काम ऐसा मैंने अपना बना लिया कि जो मर्जी हो जाए मुझे जल्दी सोना ही सोना है, राइट, एंड आई हैव टू वेक अप अर्ली। सो पूरा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरता है। आई स्टार्ट ऑफ विद योगा एंड ऑल दैट, सो फिर क्लासेस होती हैं एंड आई गेट टू सी सच प्रिटी लेडीज लाइक योरसेल्फ, सो वो बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता है। जिस दिन ना हो, देर हो जाए उठने में, मेरा तो ये हिसाब हो गया कि सैटरडे संडे को भी मैं जल्दी उठ के बैठी भी होती हूँ। सो इट्स लाइक माय एवरीडे, या इट्स माय एवरीडे रूटीन नाउ। सो आप एक दिन जल्दी उठकर देखें, 6 बजे उठें, आप नमाज के टाइम पे उठें और उसके बाद सोए नहीं, एंड देखें क्या डिफरेंस आता है आपकी लाइफ में। Agreed, yeah. And have that faith in yourself that you can do it. You can do जो मैं it. ख़वातीन को हमेशा कहती हूँ, घबराहट है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है हम ना, कि मैं नहीं कर सकती, अपने पे कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा है लोगों का, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे करूँगी, मैं तो लड़की हूँ, ये तो लड़कों के काम है, how will I do it? भाई कुछ ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक इट स्टार्ट्स देयर, आपकी सेल्फ बिलीफ पे ही स्टार्ट होता है ना। इफ यू डोंट बिलीव इन इट देन नो, यू रियली कांट डू इट। और हम ना एट टाइम्स आपकी जो सराउंडिंग्स है ना, आपके इर्द गिर्द के लोग, वो आपको इतना इनसिक्योर बना देते हैं, वो आपको बार बार ये चीज़ आप में इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं कि आप नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकती। भाग जाए ऐसे लोगों से। Even your friends. सादिया, यही तो प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ कि इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन, यस, ठीक है, वी हैव स्टॉप्ड वुमेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ये ना करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये ना करो, इससे ये हो जाएगा, फलाना ना करो, मैं कर देता हूँ, किसी और को करने दो, इसको कह दो। आपने एक्चुअली क्या कैसे कहते हैं कि पावर ले लिया ना, बिल्कुल प्रोटेक्शन के ना। यस, दैट्स नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन डजंट empower you, it doesn't actually benefit you. इस चीज़ की मुझे इस तरह से थी कि जब when I was pregnant ना, and I've seen this कि जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो people start treating them as if कि वो बीमार हैं और अब उनको नहीं कुछ करना चाहिए, ना वो कुछ कर सकती हैं। and उस टाइम पे मुझे like ये फील हुआ from my husband that he did not make me feel like just because I'm pregnant I'm incapable of doing something and I should just be resting all the time. You're not sick. Yeah, Come he was on, very, for God's sake, you're pregnant, you're not sick. He was very encouraging and empowering all the time कि तुम खुद कर लो, तुम यूँ कर लो, मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे उस टाइम पे बता। So I think वो आप एक औरत को वो दें for her to decide where she needs the help or support, where she can't do a certain thing, but if she can, let her do it. Let her take that power. Let her, और जब तक वो करेंगी नहीं तब तक कैसे चीज़ें चेंज होंगी। Let her have that experience. Let her experiment also. But आपने अगर उसको इतना प्रोटेक्शन के नाम पे जैसे कहा कि केज कर दिया है, she is not allowed to do anything. How will she learn? ठीक है, आप चले छोड़ दें, आपकी बीवी है, छोड़ दें। वही बात कि आप फिर बिलीव करना शुरू हो जाते हैं that you can't. मैं तो हमेशा कहती हूँ, जो भी अगर मर्द भी देख रहे हैं पॉडकास्ट, आई एम श्योर देखते होंगे, कि आप छोड़ दें कि आपकी बीवी है या बहन है जो आपका प्रोटेक्शन, आप ये सोचें कि मेरी अपनी बेटी को सामने ले आएँ, बेटी के बारे में सोचें, अपनी औलाद को, अपनी बेटी को सामने रखें और ये कहें कि कल को कि ज़िंदगी मौत का किसी का नहीं पता, कि अगर मैं ज़िंदा नहीं हूँ और मेरी बेटी को ये काम करना पड़ जाए तो क्या उसे आएगा, तो कैसे आएगा? बहैसियत बाप अब वो कैसे सिखाएंगे? आप उसको चाहेंगे कि वो जाए, खुद से सीखे। पीपल मेक मिस्टेक्स, गलतियाँ होती हैं, औरतों से नहीं मर्दों से भी गलतियाँ होती हैं, बट गलतियों से आप सीखते हैं। ये मतलब नहीं कि गलती कर दी तो नहीं अब जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, कि अब तुम घर से बाहर ना निकलना, तुमसे तो एक गलती हो गई। नो, डोंट डू दैट। लेट अ वुमन लर्न फ्रॉम हर ओन मिस्टेक्स। मेरी पॉडकास्ट में एक आई थी खातून, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं बहुत अपने अब्बू का इस चीज़ का शुक्र अदाती हूँ कि एक दिन उन्होंने, जबकि हमारे पास गाड़ी भी थी, सब कुछ था, शी स्टार्टेड वर्क और शी स्टार्टेड कॉलेज, आई डोंट नो, बट उन्होंने जाके उसको बस स्टॉप पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा आज से तुम ये खुद जाओगी। बिल्कुल। एंड कहती हैं उस टाइम पे आई वाज सो एंग्री एट माय फादर दैट वी हैव अ कार, व्हाई डू आई हैव टू डू दिस, बट ही वाज टीचिंग मी अ लेसन। बिल्कुल, कि ये करना ज़रूरी है, कल को तुम खुद कर सको, तुम जिस भी सिचुएशन में हो, तुम जिस भी जगह हो, तुम में अपना आपको संभालना आता हो। अब यही होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हु आर सो पैम्पर्ड कि उनको समझ में नहीं आता अगर कोई मुश्किल आ जाए उन पे, कोई भी,
how to handle it, you know, how to overcome those obstacles in life. शेल्टर्ड लाइफ आपने दे दी तो अब उन्हें कैसे पता? कैसे करेंगे? राइट. सो फिर जब आपका ये इसमें इस इंडस्ट्री में आप गई तो आपका फ्रॉम दैट टाइम अप टिल नाउ टीवी इंडस्ट्री में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वो एक इंडस्ट्री कैसी है? आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि यू नो यू आर एन एंकर ऑन टीवी एंड that's a big thing to be now, especially. So what is how did you end up becoming an anchor eventually at 92 News, and कैसा आपका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है? What are the behind the scenes of this industry? Okay, so when I started with the media industry, I told you that I was 16 and a half. पहला चेक PTV से मिला तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी. Obviously at that age कोई सोच भी नहीं सकता था कि आपने कमाना शुरू कर दिया है. When my class fellows they used to study या फिर घूमने फिर रहे जा रहे हैं और मैं ऑफिस में रिकॉर्डिंग्स करवा रही होती थी. So मेरे आई थिंक बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज ऑफ माई जॉब, उस टाइम पे शायद कोई भी जॉब होती, आप अगर यंग एज से आपको आदत पड़ जाए तो आपका मैच्योरिटी लेवल ना बड़ा डिफरेंट हो जाता है. मुझे उस टाइम पे लगता था कि मैं अपने क्लास फेलोज़ के साथ रिलेट नहीं कर पा रही हूँ. राइट, दे वुड कॉल मी अप कि हम वहाँ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सो शुड वी पिक यू अप, एंड आई वुड से कि या, एंड आई वुड से नो आई एम बिजी वर्किंग. सो मैंने वो वाला टाइम जिसको बहुत लोग बचपना भी कहते हैं, 16-17 साल की एज का या जवानी कहते हैं, जो भी कहना है, वो टाइम मैंने काम करते हुए गुजारा. और उस वक्त से अभी तक काम ही कर रही हूँ. नाउ आई एम 35 और अभी भी कोई चांस नहीं है दूर दूर तक के काम करना बंद करूँगी. एंड आई रियली डोंट वांट टू स्टॉप वर्किंग बिकॉज दैट कीप्स मी सेन. सो मेरे लिए वो एक तो बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने फ्रेंड्स से, इवन क्लास फेलोज से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, बात नहीं कर पा रही हूँ. मैच्योरिटी लेवल आपका चेंज हो जाता है जब आप काम में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं. एंड देन सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया कि वो मॉर्निंग शो, एंड देन उसके फ़ौरन बाद पे मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी. हमारा ऑब्वियसली PTV का ख़बरनामा बड़ा हिट चीज़ होती थी उन दिनों में. आई हैव डन दैट. फिर हमारा इंग्लिश PTV लॉन्च हुआ, इंग्लिश बुलेटिन्स उस पर होते थे. आई डिड दोज ऑल्सो. फॉरेन ऑफिस की बीट हो गई, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग हो गई, इंटरनेशनल ट्रिप्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट्स के, वो भी कवर कर लिए. चैनल 3 एक आया था, उसमें एज VJ भी काम कर लिया. सो आई हैव डन एवरीथिंग इन मीडिया. एंड देन करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल टॉक शोज, यू जस्ट नेम इट. मैंने सब चीज़ें जो हैं वो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कर ली हैं, except modeling and acting. Obviously that was never my your cup thing. of You cake. were on Yeah, it was not my thing. Yes, hosting shows, चाहे वो entertainment के थे, infotainment के थे या political थे, वो मैंने किए. So 92 के साथ मुझे I think 6 साल से ज़्यादा करसा हो गया है. And बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है. ऑब्वियसली हर जगह के थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, कुछ ना चीज़ें तो चल ही रही होती हैं, बट ये फील्ड ऐसी है करंट अफेयर्स की, जर्नलिज्म की, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर शो विद 3 पॉलिटिशियंस, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिर्च मसाला टाइप लगा रहता है, कुछ स्पाइसेस चल रहे होते हैं, यू नो. एंड अब तो जाके इतनी अजीब सी चीज़ें हो गई हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी कि रोज़ आपको पता है एक ही टॉपिक है. आई डोंट गेट बोर्ड विद दैट, बट yes, I wish that there was a margin of doing something else. So let's see वो कब options या avenues open up होते हैं in media. And जो अभी आजकल जो situation है, let's talk a bit about politics. Let's talk a bit about because you know you're an anchor and all, so do you think that there's a lot of pressure, freedom of speech के मसले? What do you think about that? कि अब के news media में isn't it very controlled? Isn't it very, how do you feel about that? हर दौर में हम ना कुछ चल रहा होता है. So मैंने कहा ना कि 19 साल की मीडिया लाइफ के अंदर बहुत चीज़ें देख ली. लाइक मुशर्रफ का दौर भी देख लिया, पीपल्स पार्टी का भी देख लिया, नून लीग का भी देख लिया, PTI का भी देख लिया, और अब वो देख रहे हैं जब सब इकट्ठे सिवाय PTI के. सो सब टेन्योर्स के अंदर किसी की भी गवर्नमेंट हो, हर किसी के कोई ना कोई इश्यूज थे. कहीं ना कहीं कोई ना कोई, आपको मीडिया को मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर, कंट्रोल करने की कहीं किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता ही आया है. बट डू यू थिंक कि राइट नाउ इट्स अनप्रेसिडेंटेड?
या मतलब बिकॉज यू नो टू द पॉइंट कि अब यूट्यूब भी बंद हो जाता है और हाँ, चैनल्स that's बंद weird. कर दिए हैं कि That's थोड़ा weird. ज़्यादा नहीं है एट दिस पॉइंट. Honestly, अच्छा मैं वही कहती हूँ कि लोग इतने समझदार हो गए हैं कि आप उनको कुछ ना भी बताएं, they understand each and everything. Yes. They understand these things now. So I just wish कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये समझ आ जाए कि भाई अब तो आम लोग जो हैं वो समझना शुरू हो गए हैं and they should not be repeating those mistakes again and again. Like आप ही फिर अजीब लगते हो उसमें. Exactly. हाँ. So आप लोगों को दें वो शऊर जो लोगों में आ चुका है, वो अवेयरनेस ऑलरेडी है, आप लोगों को दें, ऑप्शंस दें. हाँ, एक चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होता है सोशल मीडिया पे स्पेशली कि लोग क्रिटिसिज्म में और आपके उसमें तनकीद के अंदर और क्या कहते हैं उसको तज़हीक के अंदर, लाइक ह्यूमिलिएशन में और क्रिटिसिज्म में एक बड़ी थिन लाइन होती है. वो भूल जाते हैं. आप क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं आप करें, इंसल्ट तो ना करें, ह्यूमिलेट ना करें किसी को, राइट. बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे ये होता आई है थिंक ये हर जगह है. हर जगह. हाँ, देयर इज नो लाइक जस्ट बिकॉज यू नो सम पीपल आर ऑन स्क्रीन बट सम पीपल आर ऑफ स्क्रीन. जो ऑफ स्क्रीन है वो बड़े धड़ल्ले से आगे जो बोलते हैं. मेरा तो बड़ा सिंपल एक ही रूल है, बहुत सालों का है. आई डोंट रीड कमेंट्स नाउ. Even if I have to tweet, I will tweet. And then forget about it. Forget about it. हाँ, ठीक है. I do not read I comments think that's the way. at all. I think एक point पे आप किसी का ये point आता है कि this is you know yeah that's fine. I've done that also. For your mental peace. हाँ, बैठ के बाहर अपने पीस के आप comments पढ़ते रहो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा. प्लस वो लोगों ने वो कहते हैं ना कि लोग आप जो मर्जी कर लें, people will talk, people will find a way to criticize you, no matter what. आप बहुत सोने के भी बन के आ जाएं, they will say कि अच्छा नहीं ये सोना सही नहीं चढ़ा इस पे. You know? बिल्कुल that kind of thing. कमी रह गई थोड़ी. So हाँ, लोगों को आप खुश नहीं कर सकते. That's why you can't live your life being a people pleaser. हाँ, you can't live your life being a people pleaser, right? आप अगर खुश हैं, live with authenticity, whatever that is. आप अगर खुश हैं, मेरा तो बड़ा लाइफ का एक सिंपल रूल यही है कि forget what people are saying, do not think about them, their opinion does not matter, you matter, right? आप खुद अपने आप से अगर खुश हैं, इंसान को खुद पता चल जाता है. If I'm doing something wrong, I will know. आपका अल्लाह ताला ने ज़मीर क्या है, कॉन्शियस क्या है, आपका यही बताता है. अगर वो कॉन्शियस ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आ रही है कि आपने कहाँ पे कुछ गलत किया है, तो आप करेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते. बिल्कुल. आपको इतना खुद पे यकीन होना चाहिए कि अगर मैं गलती कर भी दूँ तो मुझे पता है हाउ टू करेक्ट इट. मुझे उसके लिए लोगों की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है. सो मेरा बड़ा ये सिंपल हो गया कि अच्छा मेरे फ्रेंड्स भी जो हैं, पहले तो हम ये होता है कि हर किसी को जिसको जानते हैं उसको भी फ्रेंड बोल देते हैं. राइट. सो आई हैव अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनको मैं वाकई फ्रेंड्स कहती हूँ, एंड those are people I would say that they know me inside out. ये क्या है. Otherwise जिसको जो बोलना है बोले, I really don't care. हाँ, क्योंकि they don't know me. They don't know me. And ज़्यादातर ओपिनियन आती ही उन लोगों की तरफ से people who don't know me. So वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे आपको उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता. So कहने दे. And they also spend a lot of time telling you what you should do with your life. कोई बात नहीं. Without knowing any context और वो कहने दें. So as an industry, औरतों के लिए industry कैसी है? मतलब मैं I'm asking you this question. Yeah. If anybody is ever thinking about, you know, how to become an anchor, you know. बहुत ज़्यादा लोग हैं. तो बहुत ख़वातीन हैं. मॉर्निंग शोज़ में देख लें, एंटरटेनमेंट शोज़ में देख लें, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा हैं. अब तो आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. Yeah, and acceptable also. Acceptable. I think industry is conducive. Like environment ऐसा है that it's conducive for women to step in and work. Right. अच्छा, अब इस सारी situation में योगा, how did you stumble upon that? How did that journey happen to the point that I think you've been doing it for 8-9 years? I always loved doing yoga. Yeah. So how did that happen? And now you're a trainer. So ये कैसे हुआ? योगा भी मैंने उस वक्त शुरू किया था, आई रिमेंबर, जब आई वॉज गोइंग थ्रू अ फ्यू डिफ़िकल्टीज़ इन माई लाइफ. राइट. उससे पहले हमेशा सुबह 8 बजे जिम, दैट वॉज माई रूटीन. यू नो, वर्कआउट एंड हेवी वेट लिफ्टिंग एंड एवरीथिंग.
But then when I found yoga, I think yoga changed my life in every way. It's not only physical but also mental, and I think at that time I needed that. Meditation did wonders for me. Meditation is difficult, obviously. जब आप शुरू करते हैं, maybe you're not able to concentrate, आपका focus limited होता है, नहीं आपको समझ में आता, but it takes time. You have to keep doing it. Yes, Still you up, just keep doing mindful. it. Practice, nothing else. So meditation works for me. Yoga has done wonders. But after a few years, I realized that, I want to learn more. The history, how it started. I developed an interest, obviously. So then I thought that, I should go for certifications. And where did you do that? Then I have one from World Yoga Foundation and International Yoga Alliance India, and World Yoga Foundation is from the US and European Union. Achha. So it's really nice, and now I enjoy taking my yoga classes, and I get to meet a lot of wonderful women like yourself, and that also keeps me busy and sane, and I think लोगों का हमारे यहाँ एक और बड़ा misconception है about yoga, that they think yoga is something about Hinduism. एक वो religion का aspect लेकर आते हैं लोग. It has nothing to do with Hinduism. Yoga की आप history देखें, it started from Mohenjo-daro and Harappa, जो अब पाकिस्तान में है, पुरानी इंडस सिविलाइजेशन के टाइम से चलता आ रहा है, बट लोगों के कॉन्सेप्ट्स बड़े अजीब हो गए. लाइक एक दो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम घर से निकल रहे होते हैं तो हम ये नहीं बताते कि योगा करने जा रहे हैं, हम बताते हैं कि हम जिम जा रहे हैं. बिकॉज यू गेटिंग माई पॉइंट कि योगा को किस तरीके से लोग लेकर चल रहे हैं. हिंदू वर्शिप प्रैक्टिस समझी जाती है, and it is not. I mean, you have attended my classes. You know how it works. And then when you are meditating, again, how you relate to that concept of meditation. Right, when what you are thinking about that higher power, when we say universe, when we say divine, so obviously you're thinking about Allah. You're thinking about you Allah. are making that connection with Allah strong. You want that connection. You want to talk to Allah. You want to feel safe. You feel that you have that white protective light, surrounding you, and that light is given by Allah. That Allah will keep you safe no matter what. No matter what. So it varies from individual to individual how you relate to it. So yoga के बहुत सारे, you're saying that it mentally benefited you as well. So, and you've really studied yoga and its history. So how does yoga actually have those benefits on you, mental benefits or emotional benefits? How does it make those better? Because I know कि anxiety help होती है, depression से help होता है. So how does that happen? Now I think I'm emotionally a very strong person. Very strong person. I wasn't like this before. I was kind of a person जो even if you talk to me, thoda sa, if you scream at me, I would start crying. Right? फौरन मुझे रोना आ जाता था, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता था. So I was like, no, this is not right. This is not right. I have to be strong. And when I say I have to be strong, I have to show it also. I have to feel it also. So it has had tremendous benefits on my mental health. I'm more calm. Anxiety उस तरीके से obviously नहीं होती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके. And then plus again वही वाली बात है, I have understood the concept of acceptance from it. वो बहुत, उसने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है. कि अगर मैं यही सोचती रहूँगी, जो कभी कभी दिमाग में सोच आती है, हर इंसान के आती है, जो मैं अपनी क्लास में भी कहती हूँ, that your mind has this tendency to wander, right? It will think about thousands and thousands of unwanted thoughts, unwanted emotions will arise. It's your job how to get rid of those emotions, right? Anything which is not serving you in the moment, that concept. So accept it. And once you have that acceptance that things might not go your way, maybe, what you planned didn't happen. But whatever is happening, maybe that's for your own good. So accept that. Once you have that acceptance, everything gets sorted. Everything from there
gets easier. So that's how it has helped me. And now I want कि हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ना योगा का देखें, मेंटल एस्पेक्ट जो है ना उसको ज़रूर सामने रखें. हमारे यहाँ अभी भी इसको बुरा समझा जाता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात क्यों करते हैं. बिल्कुल. Right? I have suffered from depression. I know how it feels. I know how bad it hurts. I know that. I have gone through this. And at times, you just try to suppress your emotions. आप कहते हैं नहीं है नहीं है नहीं है, बट वो चीज़ आपको अंदर अंदर खा रही होती है. वो कहते हैं कि it gets stored in your body. So first, understand that it's okay to have it. You might feel low. There would be days when you are down. It's fine. It's absolutely fine. हम मानते नहीं हैं. आप घर में भी बात करें, अगर कोई बच्ची है या बच्चा है, पेरेंट्स से जाके बात करेगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मुझे ऐसे, उसको झड़क देते हैं, डांट पड़ जाती है उसको कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हें कैसे डिप्रेशन हो सकता है, तुम्हारी स्ट्रेस तुमने क्या है? देखा ही क्या है, तुमने स्कूल और कॉलेज के अलावा देखा ही क्या है. सो अभी तो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए हो, तुम ये बात कैसे कर रहे हो. दिस इज रॉन्ग. डिप्रेशन जो है उसके सिम्टम्स एक छोटे बच्चे में भी आ सकते हैं, विच पेरेंट्स डू नॉट रियलाइज. इसको एक टैबू बना दिया गया है कि आप यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. प्लीज टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ. I just wish that it gets easier to talk about it. And people stop judging you for this. आप किसी psychologist के पास जाते हैं, किसी psychiatrist के पास जाते हैं, you know what the first thing which you get to hear, and I have heard it from a lot of people who tell me कि मैं psychologist के पास गया तो people said पागल हो गया. Yeah? So that's the first question. क्या पागल है, ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है. This is crazy. This is crazy. Yeah, that's. आपकी जैसे आप अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं, आप सब कुछ करेंगे ना, आप तैयार भी हो रहे हैं, यू वुड ड्रेस अप एंड यू वुड वेयर न्यू क्लोथ्स, न्यू शूज़. माइंड को कहाँ लेके जाएंगे? And the worst part is कि we spend a lot of our time and effort on what's on the outside. Yes. Appearances. And what's on the inside matters more. So appearances can be deceptive. Right? एक इंसान जो बहुत खुश नज़र आ रहा है, स्माइल भी है उसके चेहरे पे, उसने अच्छे कपड़े भी पहने हुए, ब्रांड से लोडेड है, बट आपको नहीं पता कि उस बेचारे या बेचारी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या इस वक्त स्टेटस है. सो ये अगर हो जाए कि आप किसी को एक तो जज ना करें. हमारे यहाँ बहुत सबको सबका पता है. दे नो एवरीथिंग. मुझे हमना के बारे में भी पता है, मुझे सादिया के बारे में भी पता है, मुझे सबके बारे में पता है. पूरी उनको सिर्फ अपना नहीं पता होगा, बाकी पूरी दुनिया का पता होगा. बिल्कुल. सो बहुत जजमेंटल लोग होते हैं और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि अच्छा बहुत ज़्यादा. वो वल्नरेबल होने की स्पेस नहीं है, इमोशंस की एक्सेप्टेंस की स्पेस नहीं है, और जब तक वो नहीं होगा देन यू कांट रिजॉल्व इट. तो अभी अगर कोई मुझसे बात करता भी है मेंटल हेल्थ के हवाले से, अगर किसी को अपना कोई इशू डिस्कस करना है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. मैं हमेशा बात करती हूँ. और मैं आई ट्राई कि लोगों को आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सिखाएं. उससे ये होता है कि आपके साथ लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिलेट कर सकते हैं. लाइक यू आर डिस्कसिंग माई लाइफ विद मी, सो मे बी किसी कोई और इस चीज़ से गुजर रहा है हो तो उसके लिए आसानी हो जाएगी. देन मेरे लिए आई थिंक योगा की वजह से एंड बिकॉज ऑफ बीइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग, लास्ट ईयर आई एंडेड अप माई सेकेंड मैरिज. अच्छा, यू गॉट मैरिड अगेन. या. When was that? So, कब आपने की दूसरी शादी? 2018 January. ठीक है. And that was after a long time, right? I waited and waited because second marriage is एक तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, and especially when you have a kid. And you're very well settled in your life, then it's a very big decision. Very big decision, yes. So हमारे यहाँ भी यही ना कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो सेकंड मैरिजेस लोग कहते हैं अच्छा चलो ठीक है दूसरी शादी कर लेंगे कोई बात नहीं, बट बच्चे ही हैं तो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. मुझे याद है एक दो बीच में प्रपोजल्स आए, एक दो लोगों ने मुझे भी कहा, एक आधे ने कहीं मेरे पेरेंट्स के पास प्रपोजल्स आए कि ठीक है हमें ये पसंद है, हम इससे तो शादी कर लेंगे, बट बच्चे को आप रख लीजिएगा. You know, I used to get so angry. I remember telling my mother,
प्लीज़ टेल देम नॉट टू एंटर दिस हाउस एवर अगैन, एंड मुझे नहीं पसंद आपका बेटा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, कि मैं माँ हूँ, मेरे लिए मेरा बच्चा, मेरा बेटा प्रायोरिटी है. अब मैं किसी और मर्द के लिए अपने बच्चे को क्यों कर दूँ, राइट? सो आई जस्ट दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच स्टक, राइट, कि आप कैसे हस्बैंड्स मिलने को तैयार हैं, बट ऑब्वियसली आपको पता है आपके बच्चे को बाप नहीं मिल सकता. बाप अपना ही होता है, माँ भी इसी तरीके से मैंने देखा है, जो आपके माँ बाप हैं वही होते हैं. सो अब अल्लाह ताला ने अगर किसी एक की ज़िंदगी नहीं रखी उस तरीके से, सो वो अल्लाह के काम है, उसमें भी कोई रब की मसलहत होगी. मे बी शायद मेरे और मेरे बेटे की बॉन्डिंग जिस तरीके की है वो इसी वजह से हुई. देन दिस सेकेंड मैरिज डिडंट वर्क आउट, सो प्रॉबली वी आर मोर क्लोजर नाउ. हम और ज़्यादा क्लोज हैं. मेरी लाइफ में हर सेटबैक जो है ना, वो मुझे और मेरे बेटे को यूं जोड़ देता है, brings you closer. बहुत करीब कर देता है. तो अब ऑब्वियसली एज अ मदर आई ट्राइड कि मेरी वजह से उस पर कोई तकलीफ़ ना आए, और उस चीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैं कामयाब हुई हूँ. दैट्स व्हाट माय सन फील्स टू नाउ व्हेन ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज लिटिल थिंग्स सिंस ही टर्न्ड 16. सो ही थिंक्स दैट यू नो my mother did everything for me, and that's my biggest achievement. That's my biggest achievement. If my son is happy with me, if he thinks that I have been not only his mother but also his father, that's my biggest achievement in life. And it's just you and your son who live together? Yeah, now I live with my parents. So my parents, they are, my son is really attached to his nana nani. Of course, I think because you were working and everything, so they were his like... and my parents love spending time with him. अब तो खैर वो ऐसी एज में आ गया that he would avoid spending time with everybody else in the family, because ये बड़ी जो टीन एज है, बड़ी स्पेस चाहिए होती है उन्हें. I know everybody, मुझे बस they just want to be on their computer, their gadgets, nothing else, or friends. So ये वो टाइम है कि आप थोड़ा स्पेस देते हैं हर टीनेजर को. But yeah, it's alhamdulillah. I'm blessed to have supportive parents. I'm blessed to have supportive siblings. And my son is the biggest blessing of Allah which I have. So as a single mother, like of course it was, but how hard was it to be that mother and father figure? Was it very challenging? बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई होंगी ना जो आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी. एंड आई एम आस्किंग इन दिस सेंस कि आपको क्या लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो कितनी सपोर्टिव और कंड्यूसिव है टू सिंगल मदर्स? नहीं है, अभी भी नहीं है. बहुत सारी चीज़ों में नहीं है. मेरे टाइम पे तो खैर बिल्कुल ही नहीं थी, बट अभी भी ऑब्वियसली आई हेयर अ लॉट ऑफ स्टोरीज, तो पता चलता है कि इश्यूज़ हैं. उस टाइम पे अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास नहीं है कोई सपोर्ट टू कीप योर चाइल्ड व्हाइल यू आर अवे वर्किंग, कैसे करेगी एक औरत? ठीक है, हमारे यहाँ अब जो हालात हैं उससे भी डर लगता है कि आप जो भी कहीं आप चाहते भी नहीं कि अपने बच्चे को छोड़ के चले जाएं, क्या होगा पीछे, राइट? सो वो एक परेशानी लगी रहती है. आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह लकी इनफ कि माई मदर वॉज देयर. सो आप जब अपनी माँ के पास अपने बच्चे को छोड़ते ना, देन यू नो कि मेरे से भी ज़्यादा बेहतर केयर हो रही होगी. बिल्कुल. तो मुझे तो उस चीज़ में कभी एज सच कोई शिकायत नहीं रही है. बट येस, यहाँ पे अभी भी इश्यूज़ हैं. हमारे यहाँ बहुत जगहों पे जॉब्स नहीं दी जाती ख़वातीन को अगर उनके बच्चे हैं, सिंगल मदर्स हैं. हाँ बिल्कुल, राइट. कि या तो बच्चे ना हों, और अगर फिर बच्चे हैं तो फिर आप मैरिड हों. हाँ मैरिड हों. अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो फिर आप एक्सेप्टेबल नहीं हैं. सो ये इश्यूज़ अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं. चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है. आई एम स्टिल होपफुल कि it will get better over time. Yeah. Okay, so why is it that you didn't get married again for the longest time? Was it what you already mentioned कि बच्चे की वजह से ज़्यादातर people were not open? Everybody was like that, you should get married, you should get married. हर कोई कहता था तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, शादी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी सेटल हो जाएगा. He will accept. नहीं हुआ. I mean, मे भी वही बात है ना कि अल्लाह ताला ने जब प्लान किया हो हर चीज़. एंड दिस सेकेंड मैरिज ऑफ माइन इन 2018, इट जस्ट हैपेंड.
even then I wasn't prepared for it. How was your son's of course obviously आपने उनसे बात की होगी और Yeah, prepare किया obviously he होगा. knew everything. Yes, so how was He was a politician, so obviously he knew Okay, me so from how- the industry. Okay, so how was that how did your child take that? Because I know I'm asking this question Yeah. for a reason. I'm not Yeah, prying I into your know, I know, personal I life, know, but I know. for a lot of people, क्योंकि जो औरतें हैं जिनके बच्चे हैं जो दोबारा ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहती हैं गेटिंग मैरिड, इट्स डिफिकल्ट. Yeah, very difficult. So how did you I spoke to my son, though he was that quite communication? young. हाँ. So how was that communication? मैंने अपने बेटे के साथ हमेशा I have Transparency. very transparent friendship, बहुत ज़्यादा. I will discuss everything with him. He will discuss everything with me. So when I was taking that decision, I asked him, and that marriage proposal itself came to me as a shock. अच्छा. Right? I mean, it wasn't like that we were going out together or I knew Something him before. happened, हाँ. Yeah, कि मैं मुझे जानने का टाइम मिलता या कुछ भी होता. It just was spontaneous. It just happened. He proposed and I accepted, that kind of thing. So I think we had our chance to know each other after we got married. So I discussed with my son, and my son was pretty open about it. He said, I would want you to be happy in your life. I would want you to That if you think you want to do this. हाँ. He was, I think, hardly 12. Sweet, so small. So whatever he could think think, with whatever, his mind, whatever हाँ. his idea of happiness was for his mother at that time. So we got married, and now obviously it didn't work out. That's why we are Whatever that separated. reason So was, last year, December, we called it off. called it off. And obviously, if बहुत सारे लोग जब मुझसे पूछते हैं कि were you happy, right? Obviously, हर relationship में there are moments of happiness. There are moments when you're not happy, or when you feel that you're not yourself. So मैं हमेशा ये जवाब देती हूँ कि इतना ज़्यादा खुशी होती ना तो डिवोर्स नहीं होता. So ये सबके साथ है. It's part of life. But I'm not somebody के after my divorce I would start saying bad things about him. I wish him all the best. If he's happy, that's fine. Good for him. I'm happy. I think this was meant to be this way. I learned my lesson, and I will keep that lesson with me for the rest of my life. And I will try not to repeat my mistakes. That's it. Right. So, yeah, quite a journey, first marriage, all of this. And now, tell me this, what are your goals with yoga and being a yoga instructor? How far do you think you want to take that and continue that? Yeah. And I why did think, you start training people? ये क्यों आपने करना शुरू किया? Just as another... Because it, as I told you, इतने ज़बरदस्त उसका जो मेरे पे impact था. हाँ, so I you wanted for everybody others. else, yeah. हाँ. Because मैंने अपनी life में बहुत, even my friends started that with me also. And they were going through some difficult phases of their life, so they started feeling better. So that's how this idea came up. That, then I should just maybe explore this option. Yoga is my passion. I love doing yoga. I love teaching yoga. So at that time, I was only doing it for myself. And then my friends came in. Then my sister started doing it. So I was like, let's explore this option. I should teach yoga now. Oh, you're a great teacher. Thank you. Thank you. हाँ, I didn't think मैंने yoga start की ना. I didn't know what to expect. मेरा पहला experience था, but I'd heard all these great things. What do you like the most about yoga? See, I'm being an anchor. I'm here asking questions. Sure, you can ask me whatever you want. I'll tell you from the start कि मेरा yoga के साथ experience. The first time that I did yoga, I cried in Shavasana. Yeah. That because obviously, generally, I'm the sort of person who is. I've always been very big on mindfulness, and I've always been big on connecting with my higher self and spirituality. It's a very integral part of me as a person. So it was actually very odd कि मैंने कभी योगा पहले नहीं की, because मैं बहुत big हूँ on these things.
So I was like, okay, I think it's time that I did that. Yeah. But वो मैंने start भी कैसे time पे So किया? you and yoga clicked right away. और वो मैंने start भी कैसे time पे किया? मैं बहुत vulnerable position में इस तरह से थी कि my husband was going to go through a very major surgery very soon after that. Yeah, I remember. Soon after you started your classes, you told me that your husband had his surgery. हाँ, right? so जो पहले मैंने start की थी तो मैं I was already in a very emotional mental space. तो जब और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था to deal with those emotions and feelings. पूरा दिन I was just busy and I was extra busy क्योंकि मेरे हस्बैंड की सर्जरी आ रही थी तो I was gonna take time off for a month after that. तो मैं बस काम कर रही थी to finish wrap up my work before I have to go on a break. So वो जो है तो I was really busy. मुझे बिल्कुल अपनी इस वाली कि अच्छा ये सर्जरी होनी है उस बात को डील करने का टाइम नहीं मिलता था. And I remember कि a few days before the surgery the doctor very seriously said to me कि देखें take this seriously, सदके दे दें, you have a very small child और आपका ये है and it's of critical nature, तो सारी दुआएं करें, सारा सदका दें, you know, let's hope for the best. तो और उसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया. सो फॉर मी जब मैं योगा करने जाती थी तो मेरे लिए वो दिन में वो मोमेंट होता था जिस पे मैं That was for yourself. That 1 hour was to come face to face with those emotions because it slowed me down. Everything in my life is really fast. Yoga is that one time जिसमें मैं slow होके अपने you connect with your own self. I connect with my own self. और मुझे ये फील हुआ कि बिकॉज वो कहते हैं ना कि आपके सारे इमोशंस और आपके ट्रॉमास आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. योगा करने की वजह से वो सरफेस पे आने लगे क्योंकि वो रिजॉल्व हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं आपके अंदर से. तो जब हीलिंग सो जब मैंने क्योंकि आपने उनको दबा के साइड पे क्या होता है, आपने कन्फ्रंट नहीं किया होता, आपने रिजॉल्व नहीं किया होता. योगा स्टार्टेड टू हेल्प मी डू दैट. और जब मैंने शवासना की आई cried in that. A lot of people cry in Shavasana. Yeah. When I started yoga, I can't tell you how bad I used to cry. Every time I was in Shavasana, I would cry. So first time तो मैं रोई and then over time like फिर वो सर्जरी भी हुई and then every time I would go in yoga I would cry and then फिर जब सर्जरी हो गई, so I'll tell you something interesting. जब सर्जरी हो गई और शवासना के एंड में जब हम ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट करते हैं जिसमें आप थैंक यूज़ कराती हैं, तो जब सर्जरी हो गई तो that was the first time कि शवासना के पहले हिस्से में नहीं रोई, मैं थैंक यू वाले हिस्से में, because that's what I was, that's what I was feeling. So you were grateful. I was grateful कि वो हो गया, That's wonderful. हो गया. That's wonderful. So yoga has had this really good impact on me. And also one more thing, मैं हमेशा से ना I was always the kind of person who's very in the moment. अगर मैं कहीं पे हूँ, कहीं बैठी हुई तो I'm always observing कि वो जो mindfulness होती है, I'm looking at the stuff that's around me. Especially nature. I'm connecting with the sounds. I'm connecting with the वो जो कि एक ऐसी चीज़ थी with the sort of life that I have, which is very hectic. I stopped doing that. When I started yoga, it came back. Yeah. How wonderful. This is amazing. Yeah. So that's the effect your yoga has had on and you're me. absolutely right that, you know, you have to come face to face to your emotions, right? You have to face your emotions in a way that they are there, they are real. You can't just keep suppressing your emotions. You have to deal with your emotions. Deal with them, And this is where I think a lot of people go wrong. They think कि साइड पे कर दो, साइड पे कर दो. भाई हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलती हूँ that if you have gone through any trauma in your life, first thing, face that. Go back, not relive. Go back, notice what is bothering you. Just notice that emotion, that memory of yours. If it's bad, notice it. What we do is we go back and we start reliving that. So there is a difference in reliving that moment, and there is noticing that moment is something else. So then you just pick that moment. That's my way of dealing with your trauma. Pick that moment, put it in a box, and just throw it off the cliff, right? Or maybe in the sea. And this actually, Hamna, what happens is initially when people start doing it, they would start feeling heavy, because when you're meditating and when you're picturing yourself doing that, they would talk to me, they would say,
it's heavy. We can't throw it. We can't throw it. So throwing that box away is the most difficult thing. But I say, no, this is not the most difficult thing. The first step you have already taken, right? You went back. You picked it up. You picked it up. You faced it. You picked it up. You put it in a box. So you're halfway through. So the last phase is throwing it. That's where people get stuck. But if you keep doing that, you will get rid of your past trauma. That's one way of doing it. And there are 1,000 ways of dealing with your traumas. But as I said, I'm a very spiritual person. Very spiritual person. I have to have that time alone. If it's not in yoga, I have to sit with myself. I have to sit with Allah. Even if it's for 2 to 3 minutes, I have to talk to him. And I have to tell him, कि Allah, you know, this is my life and this is what has happened in my life. अगर उस दिन की कोई बात करनी है कुछ भी, I talk to Allah. And I talk to myself also. When I'm talking to myself, obviously that's connecting to Allah, right? बिल्कुल. When you sit alone. अच्छा, बड़े लोग कहते हैं कि मोस्टली बिकॉज मैं योगा हो रहा होता है या काम होता है, उसके बाद ज़्यादातर टाइम में घर पे होती हूँ. वैसे खैर टाइम ही नहीं मिलता टू सोशलाइज. एवरी वीक या हर 2 हफ्ते में फ्रेंड्स से एक आधी दफ़ा मुलाकात हो गई तो हो गई. सो दे से दैट वाई डू यू स्टे अलोन, डोंट यू फील लोनली? आई डोंट. I enjoy my company so much that I think I don't need anybody else at times. Why? Because बहुत सारे लोगों को मैंने सोशलाइज़ करते हुए देखा है. एंड देयर वाज टाइम कॉलेज के ज़माने में हम भी जाते थे, सोशलाइज़ करते थे, सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे, बट अब बहुत कम हो गया. नाउ आई से दैट इफ़ यू आर सोशलाइजिंग फॉर जस्ट to have fun or just to talk to your friends, meet your friends, that's one part of it. But बहुत सारे लोग socialize करते हैं क्योंकि उनको अपने आप के लिए कोई validation चाहिए होती है. Why do you need anybody else for that validity? Why do you need anybody else to tell you who you are? And why can't you be alone? Being alone is not a bad thing. Yeah. If you can't enjoy your own company, how the hell on earth somebody else is going to enjoy that company? And also कहते हैं ना कि you know you're in a good place and you're spiritually in a good place when you are comfortable in your own company. Yes. लेकिन लोगों का यही problem होता है कि because They can't as sit soon as alone. they're in their own company they are uncomfortable. Yeah, because why? जब लोग अकेले, because then they start thinking about those things Yes. that they're constantly avoiding or Avoiding, socializing, exactly. work. When you're alone, it comes up. Those demons. They go. So deal with your demons. Yeah. Face your demons. And we कहते हैं कि if We you all are have comfortable them. being alone, then you have faced your demons. Yes. And I think I have. So I'm pretty happy when I'm alone at home, talking to myself, connecting with Allah. And one जुमला कि या अल्लाह ये है, लाइफ में मुश्किल भी आई है. अगर मैं हमेशा पहले मेरी ना बड़ी सेल्फिश दुआएं होती थी कि अल्लाह मैं ये है, ये प्लीज़ कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें. मेरी दुआएं हम ना चेंज हो गई. मेरी दुआएं हो गई कि अल्लाह मियाँ जो आपको बेहतर लगता है मेरे लिए आप वो करना है. मुश्किलें जब लाइफ में आती हैं तो मुझे खुद से बड़ा अजीब लगने लग जाता था कि एक टाइम के बाद मैं कहती थी यार ये क्या बात हुई, जब कोई मुश्किल आती है तो आप अल्लाह से मांगते हैं राइट. और जब कुछ अच्छा होता है तो हम फिर भूल जाते हैं बड़ी जल्दी कि अल्लाह मियाँ ने अच्छा भी किया था. सो अब जब मेरे पे मुश्किल आती है ना तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ. सो दैट हैज़ चेंज इन मी. जो भी कुछ होता है ना अब मैं उस चीज़ को बड़ा एक अलग एस्पेक्ट, एक अलग एंगल में देखती हूँ. कोई मुश्किल भी आती है तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह. कि आप अच्छी चीज़ पे तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं. जब वो आप पे आजमाइश डालता है तो आप जो हैं वो भूल जाते हैं. और आपको तब ही याद रखना होता है कि ये भी आपके लिए बेहतर है. हाँ. अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की दुआओं वाली, क्योंकि ना जब मैंने योगा स्टार्ट की तो एक और चीज़ हुई बिकॉज माई माइंड ओपन टू अ लॉट ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि आपने उसमें हमें ग्राउंडेड होना और एक्सेप्टेंस वाली चीज़ जो है आपने बहुत ज़्यादा मेरे अंदर दोबारा से वो आई. तो आई स्टार्टेड हैविंग दिस डिस्कशंस विद माई हस्बैंड अ लॉट कि योगा से मुझे अब ये हो रहा है, ग्राउंडिंग माई सेल्फ मोर, एक्सेप्टेंस आ रही है, You become more humble. राइट. तो मेरे हस्बैंड ने तब ये बात की थी कि हम्बल होने का सिर्फ
इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू Yeah. ही सेड दिस टू मी, Yeah. जो कि आपकी बात से बिल्कुल Yeah. अलाइन होता है. कहता Yeah. है अगर आपने पूरी तरह अपने आप को ग्राउंड करना है ना, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी दुआ अल्लाह से सिर्फ एक होनी चाहिए. ही सेड टू मी, मेरी अल्लाह से सिर्फ एक दुआ है कि जो हो वो मेरे लिए बेहतर हो. बिल्कुल. क्योंकि अगर आप अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहे हैं, हाँ, ये अल्लाह में मुझे ये दे दें या ये करें, तो यू आर एक्चुअली फाइटिंग. यू आर सेइंग नो, आई नो व्हाट्स बेस्ट फॉर मी. you don't. माय हस्बैंड You सेड दिस don't. कि हम ना अगर तुम Absolutely. हर चीज़ पे ये कर रहे हो तो तुम अल्लाह को ये कह रहे हो कि नो ये मेरे लिए बेहतर है, अल्लाह मियाँ मुझे ये दे. Absolutely. लेकिन अल्लाह को बेहतर पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है. आप यही बस बोलोगे बस वो दें. एंड दिस इज द सेम थिंग दैट वी से टू बी वन विद द यूनिवर्स, कि Yes. जो आपके लिए बेहतर है हाँ. वो आप उसमें नेचुरली फ्लो करो. You don't demand. You Right? let it you be. You stop demanding from the universe, from God, what you want in your life. You just say कि आपको जो लगता है अल्लाह मेरे लिए बेहतर हो सकता है, वो आप करते हैं. Whatever, because you know everything. My You husband know the said- best. My husband I said, don't. stop demanding. He said, start manifesting. Yes. There's a big difference. Exactly. Yeah. We only demand. ये कर दे अल्लाह मियाँ, ये कर दे, कल अकाउंट में पता नहीं 1 लाख रुपए आ जाए, करोड़ रुपए आ जाए, ये हो जाए, मेरी यहाँ जॉब लग जाए, फलां लड़के से शादी हो जाए, फलां लड़की से शादी हो जाए. प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. डोंट. अपने लिए दुआ मांगे, जरूर मांगे, बट अल्लाह से मांगे कि अल्लाह में आपको जो मेरे हक में बेहतर लगता है प्लीज वो कर दें. बिल्कुल. एंड डोंट स्टॉप दैट. हम लोग अक्सर अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें होने की राह में खुद ही बड़ी रुकावट बन जाते हैं. तो यही दुआ मांगनी चाहिए कि मैं अपनी किसी स्टूपिड दुआ से किसी बात से करते हैं हम एट टाइम्स अपनी बहुत सारी जिंदगी में चीजें. होता है, हर इंसान के साथ होता है, बट एटलीस्ट आई थिंक ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे अब सीखना है. आप गलतियाँ नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे. बट कुछ लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं, मैं कहती हूँ गलती पे गलती करते हैं, फिर भी नहीं सीखते. वो गलत है. दैट इज़ गलत. ट्रू. सो खैर मैं तो आई बिन ऑन अ जर्नी रिसेंटली ऑफ, क्योंकि जब ये मेरे हस्बैंड वाली चीज़, इस तरह के मोमेंट्स आते हैं ना आपकी लाइफ में विच आर आई ओपनिंग, विच आर लाइक ओ माई गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन. 2020 में मेरे साथ एक चीज़ हुई, उसके ऊपर हुआ. उससे पहले 2018 में. सो थिंग्स हैव हैपेंड इन माई लाइफ दैट हैव शेकन मी फ्रॉम माई कोर. उससे पहले मेरे अब्बू की डेथ. और सो आई एम ऑन इन दैट फेज वेयर आई एम जस्ट लाइक कि आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ wellness जिसमें योगा इंक्लूडेड थी. सो दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लान कि आई एम ऑन अ वेलनेस जर्नी. दैट्स व्हाई आई रिसर्च्ड योगा बिकॉज दिस इज वाज पार्ट ऑफ दैट. एंड देन फिर उसमें ही ग्राउंडिंग और एक्सेप्टेंस वाली चीज़ जो माइंडफुली मैं अपनी लाइफ में आजकल करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड दैट इज़ टू फोकस ऑन राइट नाउ फॉर मी इज़ टू फोकस ऑन जो मैंने आपसे बात की थी, नॉट अपीयरेंसेस बट व्हाट्स ऑन द इनसाइड. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. So for me, and that happened in every aspect. I started, I was like मैंने to the point कि मैंने appearances और beauty से attachment अपनी छोड़नी है. तो मैं from the core I'm dealing with all of these things. If you're happy from inside, if you're satisfied, if you know yourself from inside, you're connected with your own self. बाकी चीज़ें तो बहुत बात की है ना. बाद में बहुत बात की. Internal work first. And internal work also includes what you're eating. That's why I went on these. I went on a diet as well, and I started what you're feeding your body. आप अपनी बॉडी के साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं. तो मैंने वो जब मैंने योगा स्टार्ट की तो मैंने साथ ही इसके ऊपर भी आई स्टार्टेड वर्किंग विद न्यूट्रिशनिस्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा फूड है क्या, व्हाट डज इट डू टू आवर बॉडी. एंड उसमें भी मैंने रियलाइज़ किया कि आप खाना जो है जब बेहतर खाना शुरू करते हो आपके एनर्जी लेवल्स ही और होते हैं, आपका मूड ही कुछ और होता है. You are what you eat. 100%. और टाइम, खाने का टाइम रात को 1-1, 2-2 बजे खाना प्लीज बंद कर दें. कहते हैं 8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए. हाँ, ट्रू. So yeah, a lot of great things are happening on the inside that I'm working on. I'm glad that and you are part of that journey for me. बीच में ना मैंने सोचा कि अब जो है बिकॉज आई एम गेटिंग बैक टू वर्क बहुत सारा, तो मैं योगा अब छोड़ दूँ. मैंने सोचा ये, पर फिर मैंने सोचा, फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि मेरे ख्याल में मैं छोड़ देती हूँ, टाइम नहीं है ये नहीं है. फिर मैंने कहा नहीं, दिस इज़ द स्वीट स्पॉट, दिस इज़ द पार्ट वेयर आई हैव टू कीप डूइंग इट. अभी मैं इससे छोड़ी हूँ कि मुझे ना कि अच्छा बस कर लिया है, नहीं, बट आई नो दैट इफ आई कीप डूइंग इट हाउ मच
better results I can see and how better I will get at it. Consistency is the key. Yeah. हर लाइफ में ऑलवेज रिमेंबर कोई शॉर्टकट्स नहीं है किसी भी चीज़ में. बिल्कुल. ठीक है. मुझे अब खैर बहुत लोग करते भी हैं, बहुत हम इंडस्ट्री के अंदर भी अपने देखते हैं, आज आए कल मशहूर हो गए, सब कुछ हो गया, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. बट शॉर्टकट्स नहीं होते. I agreed with इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ. 19 years to be here where I am today. Yeah. So हर चीज़ में आप चाहे योगा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, whatever, there are no shortcuts. You have to take. इनफैक्ट आपने अगर कोई शॉर्टकट ले लिया ना तो वो सस्टेनेबल नहीं होता. वो फिर 2 दिन की बात होती है, वो फिर ख़त्म हो जाता है. अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म करना है तो कोई आपने प्रॉपर बेनिफिट्स देखने हैं, कोई प्रॉपर रिजल्ट देखना है, यू हैव टू टेक द लॉन्ग वे एंड यू हैव टू टेक द डिफिकल्ट रोड एंड यू हैव टू डू इट. Agreed with you. Slow and steady wins the race. बिल्कुल. Anything else that you want to talk about? Want to say? I think we discussed everything. And thank you so much for all the insight. इतना मज़ा है आपके साथ, इतनी interesting हमने बातें. Pleasure is all mine, and I'm telling you, this was so much better than my interviews to any TV channel. This was a different thing which we did, and I loved it. So thank you. I'm so glad. Actually, हमने जब podcast start की थी, because my husband has a podcast as well. Yeah. तो जब हमने start की थी तो I don't know if you saw, he did a podcast with Imran Khan as well. That was my husband. तो तब हमारा idea यही था, because हमें conventional TV के interviews से ही था कि ये जो हैं, there's so much, like why do they keep doing the same thing over and over again. So उस पे था कि okay, then digital media पे there is more freedom. Plus you get altogether a different audience on digital media. Yeah, true. So बिल्कुल. that's the excitement. That's the excitement. Yes. But again, thank you. Thank you. And I will see you on Monday in Definitely. the yoga class. In the yoga class, yes. And thank you so much for tuning in and listening to this conversation. बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ learn किया. I hope आपने भी किया होगा. Please leave comments on this video, your favorite parts, what you learned, anything that you guys might want to add. Also, please like and subscribe to the channel. It is very encouraging for me when you like and you send me feedback. Otherwise, कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं बंद कर दूँ. And if you don't want me to do that, then please engage. Thank you so much, and I'll see you in the next episode. Allah Hafiz.